लेकिन आपने तो यहाँ तक कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चैलेंज हुआ था या नहीं हुआ था. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड यू हैव एग्रीड विद द मेजॉरिटी इन दोस. 3 की पिटीशन थी आपकी SIC की. देखिए अगर आप इस तरह पीछे जाते जाएंगे ना सर, पीछे का आप मेजॉरिटी जजमेंट को रिव्यू करना चाहते हैं. मेजॉरिटी जजमेंट अभी तक आपके सामने नहीं पढ़ी गई है. आप वो पॉइंट तो आए नहीं, पढ़ी नहीं गई है. सुबह से आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 13 मेंबर बेंच की जजमेंट रिव्यू हो रही है. इट हैज नेवर हैपेंड इन. और आप मेजॉरिटी जजमेंट नहीं पढ़ेंगे पूरी. आई एम अमेज्ड. तो सर मैं पढ़ दे जी पैरा 5. When the election commission इन ओपनिंग हम लोग कह चुके हैं, एटलीस्ट मैंने तो आपको कहा जी कि भाई आप कंप्लीट जजमेंट की तरफ जाइए. जी मैं उसी पे आ रहा हूँ. और मैं कोई डॉक्यूमेंट्स आपको रेफर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जजमेंट तो पढ़ने दें. किसने मना किया है फैसला? क्यों गिला कर रहे हैं? जी When the election commission errs or makes significant mistakes impacting the electoral process. Ji sir. Mr. Siddiqui, these paragraphs, I've gone through these paragraphs, about a few paragraphs in the beginning. What I've gathered is that this is perhaps the mind has been expressed by the bench, which has given certain observations without adverting to the facts of the case. Ji. And with this bias in their mind, perhaps, if I may say so, they have proceeded to discuss the case and then concluded afterwards. Sir, so what do you say? These paragraphs, does it lay down the premise of the judgment or does they conclude the argument? मैं आपसे इस हद तक एग्री करता हूँ कि this provides the foundation on which the judgment is based. मैं आपसे इस बात पे डिसएग्री करता हूँ कि they can be considered to be a bias. लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन किए, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने जजमेंट दी. सो आई एग्री टू योर लॉर्डशिप ऑन दैट. दैट इज व्हाई दे स्टेटेड इन द बिगिनिंग. पैरा 5. These all were discussed and argued. These all points were discussed. जी बिल्कुल. Along with record. जी बिल्कुल. बट ये वो मेरा ये ख्याल में ये कह रहे हैं कि वो प्रिंसिपल्स जो हैं उनके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया, विच इज लॉर्डशिप. 13 जनवरी की जजमेंट को भी ठीक ठाक डिस्कस किया. जी बिल्कुल. बिफोर द कोर्ट ठीक ठाक डिस्कस किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं किया, ECP को ब्लेम किया. पैरा 5. तो शायद बाद में ख्याल आ गया होगा, लेकिन अपना माइंड उन्होंने शो कर दिया था कि वी वर नॉट हैप्पी विद दैट जजमेंट. When the election commission errs or makes significant mistakes impacting the electoral process, judicial intervention, now this is the 4th principle which is laid down, becomes necessary to rectify them and ensure electoral justice. The judiciary tasked with ensuring electoral justice must foremost preserve the will of the people. Election disputes. At this point of time, when this observation was given, can we look at the actual oath of the judge of the Supreme Court? What is the actually is expected to deliver on? जी मैं उस पे भी आता हूँ. मैं जरा सा ये रीडिंग कर लूँ, but I'll note that ensuring electoral justice must foremost preserve the will of the people. The election disputes are viewed through this lens, emphasizing electoral integrity and democracy's legitimacy to maintain public confidence in governance. Electoral justice is vital to protecting political and electoral rights and is intertwined with electoral integrity. The role of the Supreme Court in overseeing electoral integrity is crucial for sustaining public justice in the democratic process. And the court's power to do complete justice, this is where Article 187 comes in, is a critical tool in the constitutional arsenal of this court, enabling it to prevent democratic backsliding and protect democracy effectively with a focus on electoral rights. Denying electoral justice and compromising electoral integrity would undermine the very legitimacy of democracy and democratic constitutionalism being the central principle. तो जो आपको extraordinary intervention नजर आती है, I think by all 11 members, it's based on this principle. Now the next principle. When static interpretation fails to preserve the vitality of the Constitution's text and principle, judges have typically rejected it in favor of constitutional fidelity.
Constitutional fidelity as a concept embodies that, and 3 of the members in the minority said that PTI is entitled to this. Now the disagreement between the 11, first the disagreement between the majority and His Lordship's judgment as signed by His Lordship Chief Justice Qazi Faiziza as he was then, is that these are, some of them, ये common बात है, are PTI affiliated independents. They should be recognized as PTI members. 10 judges or 8, 11? 10. 10 judges, yes. 2 plus 8. अच्छा ठीक है 8 or 10, 11 actually have said this, that yes, PTI contested elections through these independent members. 11 have said that PTI is entitled to reserve seats. Now the disagreement occurs that as far as the majority is concerned, they have said that all 39 are automatically PTI and 41 independents have been given the option with a timeline to decide whether they want to join PTI or not. अच्छा फैसल Why they were not declared directly as मैं उस पे भी आता हूँ। फैसल साहब मेरा सवाल यहाँ है जो इसके जवाब इसी में बनता है आपने देना है कौन सी पीटीआई तो अंदर थी नहीं पीटीआई ने जनरल इलेक्शन जो था 8 फरवरी को उसमें आना था जी। उसमें अगर वो आते बैक्ड बाय पीटीआई और उधर ये कंफ्यूजन होती कि ये पीटीआई के हैं या इंडिपेंडेंट है उन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया वो क्वाइटली आके बैठ गए कि इंडिपेंडेंट उनको डिक्लेयर कर देंगे रिजर्व सीट्स वाले किस तरह एक पार्टी को अंदर लेकर जा सकते हैं जो ऑलरेडी नहीं है मेजॉरिटी और बाकी 3 जजेस ने होल्ड किया है कि नहीं वो थे क्योंकि ये पीटीआई कैंडिडेट ये पीटीआई के कैंडिडेट थे ना वो जो 8 फरवरी को जीत के अंदर आए थे मेजॉरिटी उनकी आई थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की उन्होंने पार्टी को इंट्रोड्यूस करना था वो 11 जजेस ने कहा है कि उनमें से एक तादाद अब वो तादाद में डिसएग्रीमेंट है एक तादाद जो है वो पीटीआई कैंडिडेट थी ये तो आप उधर एक मिनट so all 11 have held that PTI is entitled to reserve seats not SIC now the disagreement occurs उसमें एक रीजन ये भी था कि PTI had already submitted its list of reserve candidates along with nomination papers Yes. of the reserve candidate वो contest कर रहे थे उसमें से शायद गौर साहब उसमें he is still elected member of PTI जी he is neither independent nor SIC जी गौहर साहब तो पहले 8 फरवरी पे जीत के आए थे ना जी। उनकी पोजीशन का क्या पता मतलब ठीक है ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी लेकिन फॉर्म उन्होंने कैसे भरा था एज ए वो पीटीआई मैं आता हूँ वो सलमान एक मिनट सलमान एक मिनट as a PTI था लेट मी जस्ट कंप्लीट सर से आप वो पोर्शन पढ़ दीजिए मेजॉरिटी जजमेंट का पहले पोर्शन पढ़ दें आप मैं उसी पे आ रहा हूँ बस मैं एक चीज कंप्लीट कर लूं डिसएग्रीमेंट इस बात पे है जो मेजॉरिटी जजमेंट में भी आता है कि what is the number of people who will be considered to be PTI affiliated independents और वो अगर नंबर चेंज होता है तो ये 78 सीट सारी की सारी पीटीआई को नहीं मिलती इस पे डिसएग्रीमेंट है फिर जो इंडिपेंडेंट्स के लिए जो 41 मेजॉरिटी जजमेंट ने का एक टाइमलाइन और प्रोसेस लेट डाउन किया था वो बाकी जजेस ने नहीं माना एंड द लास्ट थिंग इज दैट His Lordship, as he is now Chief Justice Yahya Afridi, in his note, has actually left this issue by laying down these principles, left this issue to the Election Commission of Pakistan by remanding this case completely to decide. What was the difference between majority and minority is that the independents have already been given 3 days time as per Yes. clause D Yes. of Article That's the 51. Ji. So there is no need to give further time. This was the difference. Yes. So they have already joined. This is their prerogative to join any party. Bulkul. Now, let me. Mr. Siddiqui, I would like to ask you a question. Ji. Since you have not challenged that very order before this court in the review petition, whereby you would decline the reserve seats as SIC, why didn't you challenge that very order? Because at this stage you are supporting the impugn order, whereby you were denied the reserve seats. Why? जी इसका जवाब भी मेजॉरिटी जजमेंट में मैं जब पढ़ूंगा आप अपना सवाल क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है
इसका भी सवाल, इसलिए मैं इंडिपेंडेंटली मैं जब जजमेंट पढ़ना भी शुरू कर रहा हूं, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं ये आपको नजर आएगा कि जो जवाब है वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन वो सारे जवाब उसमें ये भी एड्रेस हुआ है जो आपका सवाल है और जो औरों ने किया है कि ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन एसआईसी एंड पीटीआई. दैट इज व्हाट योर लॉर्डशिप इज एड्रेसिंग. चलें, यहाँ तो एक आप let me- एक क्वेश्चन ले जी, लीजिए जी। ताकि उसको भी जवाब दें. जी जी In the proceeding of the appeal or the petition you filed before this court, two petitions. जी जी. Any party during the proceedings, any of the parties or the council claimed the seats for PTI? यस, इसका भी जवाब जजमेंट में. Who claimed? PTI and SIC both claimed for PTI and I will show to you. इसका भी जवाब मेरे ख्याल से पढ़ लें आप ताकि सवाल आप पहले पढ़ लीजिए ना, मतलब ये So- if everything is answered in the judgment then तो there is no need of असल any में ये 2 मैं दिन ना लेना आप, फिर 2 दिन ना ले, छोड़ दे 2 दिनों. हम वो मेजोरिटी जजमेंट फिर जी पढ़ जी लेंगे. उसको पढ़ने में भी एक दिन लगेगा. इफ योर लॉर्डशिप हम 2 दिन ले लेंगे, पढ़ लेंगे. जी जी पढ़ लीजिए ना. अगर मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूं तो मुझे वो पढ़ने दें. इट्स हाँ, कौन से paragraph? CMA 2919 of 2025. ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें 1 महीना भी लगा सकते हैं. नहीं, महीना मैं नहीं लगाऊंगा. अगर बिल्कुल. चाहे तो लगा सकते हैं. नहीं मैं नहीं लगाऊंगा. नहीं, मैं ये नहीं करूँ कि आप लगा रहे हैं. मैं सर कहा, अगर आप चाहें तो. मुझे भी छुट्टी पे जाना है सर. अब किसी क्लाइंट के लिए शहीद तो नहीं होना है ना सर. देखना पड़ेगा ना कि क्या होता है. नहीं सर, मैं किसी क्लाइंट के लिए शहीद होने के लिए तैयार नहीं. आप शहीद करते हैं, शहीद होते नहीं. ये भी आपका प्रेरोगेटिव है कि आप. वैसे भी सर बहुत डेंजर है कि आई माइट बी डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर फ्रॉम होम, सो आई हैव टू फिनिश दिस क्विकली. सो पेज 5 अगर आप देख लें, CMA, if your lordships have CMA 2919 of 2025, एज कौन से? page 5. Page of judgment. रेलेवेंट पे आ जाए तो बेहतर होगा. नहीं सर, पहला पोर्शन इज क्रिटिकल टू द मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं कह रेलेवेंट पे आ जाए. अगर आप जी. समझते हैं पहला पेज रेलेवेंट है, पहले 3-4 पेज पढ़ ले. आर द फाउंडेशन ऑफ दिस जजमेंट. पढ़ ले प्लीज, पढ़ ले. Sir, the first 3-4 pages are about that on what principles of constitutional law is this judgment based on. And on the basis of those principles, they have sought to approach and adjudicate this appeal. So they have laid down 5 principles in this. And these are the first 3 pages. At the core of our democratic constitution lies the will of the people of Pakistan, with free and fair elections being fundamental to democracy. The principle that the most important political office is that of the private citizen underscores the crucial role of the people, whose right to vote is the lifeblood of democratic governance. Democracy strives on the belief that the authority inherently resides in the people, a principle enshrined in the constitution of every democratic nation, including ours. Our constitution is not merely a government blueprint, but a covenant affirming the supreme role of the people in shaping their destiny. Under our constitution, while the sovereignty of the entire universe belongs to Almighty Allah alone, the authority is to be exercised by the people of Pakistan as a sacred trust, wherein the limits prescribed by him. Within the limits. It's within the limits. It posits that people are entrusted with the responsibility of governance, which is to be exercised through their chosen representative. The notion of a sacred trust elevates the responsibility of both the government and the judiciary in our Islamic Republic. It embeds a moral dimension into the practice of democracy, while the fidelity of this trust is seen as paramount. Ab ye important hai. In the context of elections, this sacred trust implies that all the actors in the electoral process must adhere to a higher standard of fair and honest, ensuring electoral integrity. One question arises. जी जी. This is my question, जी, sir. independently, not जी, of जी. you all. जी, जी, sir. Whether all the political parties are adhering to this provision of the, whether every political party has
taken step to ensure fair and free elections. That's our Whether dilemma. Every political party is not trying to use unfair mean or Yes, not. I think that's our this is for central. the politicians to upheld this. This is not That's for our the dilemma. courts. That's our dilemma, as rightly pointed out by your lordship. So जो पहला principle है वो ये है, जो laid down किया है judgment में, and that is the difference between this judgment and the judgment of the real minority, जिसे मैं कहता हूँ, authored by Justice Aminuddin and Justice Naeem Akwan, is the central notion of democracy in understanding constitutional principles. वो एक यूएस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस स्केलिया, बड़े मशहूर जज थे. वो कहते थे जब उनके सामने कोई चैलेंज करने आता था तो वो कहते थे, यस व्हाट दे हैव डन इज स्टूपिड बट इट्स नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. So simply because something is stupid doesn't ये mean that किसको it कहा है is. आपने? कौन सी ये जो पैरा पढ़ा है फिर माइनॉरिटी को आपने कि मेजॉरिटी पूछा को? ये था कि एनी वन क्लेम्ड, आपने कहा यस. Yes. Where is that? जी मैं पढ़ता हूँ वो, मैं एक सीक्वेंस में चलूंगा. ये जो आपने कोट किया किस जस्टिस स्केलिया, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने मैं उसी को कह रहा हूँ. The difference between the minority judgment authored by his lordship and this is that while interpreting Article 51 and 106, the majority judgment, including Justice Mazhar and Justice Hassan Azhar, have said that something which leads to undemocratic consequences cannot be the correct constitutional interpretation of the reserved seats provision. Whereas the minority view is that no, we will look at the text and we will not look at whether it has democratic or undemocratic consequences. I think that's the difference. That is why I referred to Justice Scalia. You mean to say that the constitutional provisions can be interpreted outside its scope and domain? No. Constitutional provisions have to be interpreted while keeping in mind that the central foundation of the Constitution is And in democratic. some cases, this code goes beyond to the provisions of the Constitution. I'm not You are saying. not challenging that it was create a great dilemma that the bench has rewrite the Constitution. No, it is not. मैं explain करूंगा नहीं, लेकिन पहला Amend the principle. Constitution. Though so many things have been heard in the public at large. नहीं. Even in the case of 63A that was condemned and ultimately it was reviewed by the another bench of this court. जी. So what the history, what the judgments say to us, जी वही मैं कह रहा हूँ, जो पहला प्रिंसिपल है ना सर, they simply say, they don't say you can rewrite, but the first principle is इक्विटी हो तो उसकी क्लैरिटी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट करे. जहां बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा है, हाउ कैन यू अमेंड द नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू there is no amendment. But देयर इज एन देखिए, there अमेंडमेंट. is a difference 3 days between की जगह the 15 days कर दिया. there is a difference between the purposive interpretation and reading down the Constitution when there is a rule of mischief. Hudson case, you know that. जी जी This is the first judgment on the purposive interpretation of the law. जी. So once the court say that this is the provision of the Constitution, whether we have to adhere to that provision or we can override it, we can interpret it in our own mind, which is beyond the scope of that No, constitutional you provision. have to adhere to the provision, but that provision has to be understood in terms of democratic constitutionalism. That is the principle. Every judgment should be democratic. No. Then what is the Leading to- impact of the Constitution? No, नहीं, what If you आप say text- that the judges should decide on the public will No, and to no, save the democratic no. process, जो मैं- which is beyond the constitutional No, provision, no, then no. what? मैंने जो जजमेंट पढ़ी है वो सिर्फ ये कहती है, when you look at a provision of the Constitution, you should always keep in mind that this is a democratic constitution. That is why every provision will enhance democracy. That is all the first. Now let me come to the second. I agree 100% with you. जी, second I principle. agree. Yes. सुनो, आगे भी why I am agreeing. sorry, Why जी, I am agreeing. जी, लेकिन इशू बात अब ये कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए. नो डाउट. मैं कहूँ यहाँ बैठे हुए किसी शख्स को ये इतराज नहीं प्रमोट होगा. की बात मैंने नहीं की. जी. डेमोक्रेसी को प्रिवेल होना चाहिए, डेमोक्रेसी को फ्लोरिश होनी चाहिए, डेमोक्रेसी को फलना फूलना चाहिए. बात सिंपल सी है कि अगर आपकी बात हम मान लें तो डेमोक्रेसी ये बताती है कि हर शख्स की मर्जी है
चाहे वो आज़ाद इलेक्शन लड़े, चाहे वो पार्टी से लड़े। तो यहाँ पे तो हुआ ये कि जिनकी मर्जी थी उन्होंने पार्टी एफिलिएशन दे दी, जिनकी मर्जी थी उन्होंने आज़ाद लिखा। कैन वी कंपेल देम? No, you cannot compel them. So और मैं let उस पे भी- everybody to exercise this democratic right. This is उस पे भी मैं आता हूं। मैं जरा ये प्रिंसिपल्स पढ़ दूं। जो सेकंड प्रिंसिपल है पैरा 3, इलेक्शन अथॉरिटीज। नाउ सेकंड प्रिंसिपल जो उन्होंने अप्लाई की है, बिकॉज सारी जजमेंट इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। Election authorities as electoral management bodies are the guarantor institutions of democratic processes and are critical to democratic governance, akin to a fourth branch of government. Their constitutional role is to ensure the conduct of the election by providing an equal and fair competitive field for all political entities and protect citizens' rights to vote. As an impartial steward of the electoral process, the Election Commission of Pakistan is not only an administrative body, but also a guardian of electoral integrity and democracy's legitimacy. When election authorities engage in actions that undermine these principles, such as, अब यहाँ से वो connect करते हैं to what happened, such as unlawfully denying the recognition of a major political party and treating his nominated candidates as independents, they not only compromise the rights of these candidates, but also significantly infringe upon the rights of the electorate and corrode their own institutional legitimacy. Now your lordship can see how they are connected to the facts of the case. The third principle, political parties. Political parties play a crucial role in representative democracy, acting as intermediaries between the state and its citizens. They are uniquely positioned to shape and structure electoral choices, organize public opinion, and integrate diverse interests into coherent platforms. I skip this and I come to the last 3 lines of para 4. मैं इस तरह skip करता रहूंगा, आप फिक्र ना करें. For democracy to endure, political parties must be supported and strengthened and not eliminated. A democracy without political parties is unlikely to sustain itself for long. ये भी आप देख सकते हैं कि इससे किस तरह related है, because one of the major political parties. What is the relevance of this paragraph or this phrase? जी, Whether any political party was eliminated? the election commission did that. Where is that order? जी, Where is the? yes, is there election commission has passed the order. Was that challenge? जी, Was that challenge? yes, वो सलमान वो समझाएंगे क्योंकि उनका केस